Kahraman Karadan. Yes, आज है डे 6 ऑफ द इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इन गोवा. तर आज डे 6चा रेड कार्पेटार कोण येता ते पळोवया. फिल्म फेस्टिवल में डिफरेंट फिल्म्स होते हैं. मतलब जो बोलते हैं ना कि टाइप्स ऑफ मूवीज. आता असे म्हणतात की सगळ्यांक मूवीज आवडटा अशें ना, पण एक मूवी अशी असता जी असले टायपाचे मूवीज पळोवपाक आवडटा. म्हणजे ते म्हणटात पळय मन सामकें आपूण विसरून गेलो तशें. पण असले खंयचे टायपाचे जॉनर म्हणजे कितें आयकलां तर हय, म्हणजे थोडे मूवीज आमी म्हणटात पळय ती कॉमेडी मूवी, थोडे आमी मूवीज म्हणटा पळय ते ड्रामा मूवीज, थोडे म्हणटा आमी पिरियड मूवीज, थोडे म्हणटात आमी हॉरर मूवीज. डिफरंट टायपाचे मूवीज असता. आता डिफरंट टायपाचे मूवीज डिफरंट टायपाच्या लोकांक आवडटा. म्हणजे लायक म्हाका जर सपोज लव स्टोरी आनी कॉमेडी आवडटा पण हॉरर पळोवपाक भंय दिसता, पण थोड्यांक फक्त हॉरर पळोवपाक आवडटा. हॉरर थ्रिलर म्हणजे तसले टायप. थोडे म्हणटात कितें बाबा आमकां मॅसेज ओरिएंटेड फिल्म जाय बाबा, म्हणजे एक मूवी मॅसेज शिकोवपाक जाय. वा, जर ती मूवी मॅसेज शिकयना जाल्यार कांयच फायदो ना. थोडे म्हणटा बाबा मॅसेज ओके आसा पण एंटरटेनमेंट जावपाक जाय. हांव जर फॅमिली बरोबर वता जाल्यार म्हाका एंटरटेनमेंट जाय. मॅसेज ओके बरें आसा. डिफरंट मूवीज, डिफरंट मूड्स, डिफरंट लोक. येस, सो तुमचो मूड त्या टायमार कसो आसता त्या प्रमाणे मुवीजांक वचा. आणि तुमच्या सगळ्या टायपाचे मुड्सा प्रमाणे सगळ्या टायपाचे मुवीज हांगा तुमकां पळोवपाक मेळटले. हांगा येस, बिकॉज दीस इज इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल. इंटरनॅशनल वर्डाचो कितें तरी मिनींग आसा, कित्याक हांगा सगळ्या टायपाचे मुवीज तुमकां मेळटले. नॉट जस्ट ऑफ इंडिया बट इंटरनॅशनली. अशें म्हणटा 100 वयर कंट्रीजाच्या लोकांचे डिफरंट मुवीज ह्या फेस्टिवलान आसा. कित्याक रावले पळयात. तर ऑल्सो आमी हें पळोवया की हे डिफरंट मुवीज म्हणजे लोकांचे कितें रिएक्शन ह्या डिफरंट मुवीजांच्या रिगार्डींग आसा. येस सर, मुवीज म्हणजे तुमच्या खातीर कितें? मुवी म्हणजे म्हज्या खातीर लॉट ऑफ एक्सपिरियन्स. सगळे जगार भोवंक शकना ते सगळे जग हांगा पळोवंक मेळटा 8 दिसान. फॉर एग्जाम्पल अमेरिका पळोवंक मेळटा, जपान पळोवंक मेळटा, युरोप पळोवंक मेळटा. ते बरें सगळे त्या जगान कितें घडटा तें खरें घडटा तें कळूंक मेळटा. आनी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स तातूंतय मेळटा. वेगवेगळे अनुभव पळोवंक मेळटा. आपणें कसो वागचो लोकां कडेन, कशें वागल्यार परिणाम कितें जातलो हें कळटा. सेकंडली मुवीजान डिफरंट जॉनर आसता, जशें की ड्रामा, हॉरर, कॉमेडी. तुमचो फेवरेट जॉनर खंयचो? म्हाका दिसता म्हाका चडशें आवडटा कॉमेडी. फॉर एग्जाम्पल म्हाका नाटक तें घरात गणपती हें म्हाका एकदम आवडलें. सगळे झगडले पण सगळे निमाणे सगळे एकठांय जाले अशें जावंक जाय. सो आतां पळय आमचे जे गेस्ट जे वेगवेगळ्या देशांतल्यान वेगवेगळ्या पार्ट्सांतल्यान आयिल्ले आसा तांचें कितें म्हणणें आसा इफीच्या बद्दल. सो नाव वी गॉट गेस्ट फ्रॉम केरला. सो लेट्स सी वॉट दे हॅव टू से अबाउट इफी. सो मॅम, इट्स अ गेम where I'll just ask 3 questions. You need to answer the questions with one word. That's it. So first I'll ask you, then you, then you. Okay? So first is, when it comes to International Film Festival of India, what is that one word comes to your mind? This vibe. Yeah. What's your word? I don't know much about this. What is that one word that comes to you after looking at this like the Experience for me. wonderful experience? Okay. What is that one word? Human touch, emotional feelings about this film festival. Okay. I think she has given a deep answer because she has got more time as compared to this. Okay, that's a very good thing. Now the second question is, when it comes to movies, why you like movies according to you? That is entertainment, happiness, emotional. That's all. Okay, we have got 3 words. That's really amazing. Now, when it comes to movies, what do you like about movies?
They give a touching experience to us, and we can come through the words, variety of culture, and their feelings, and the beauty of the world. Superb, superb. Okay, so they are very much enjoying the interview, I think. Yes, ma'am. The one who has given the bigger answer earlier. Let's see what she has to. Let's see what she has to say now about Iffy. So now, ma'am, why you like movies? I like movies because I also watch the character, how to act that incidents, how to they figure about that it. Okay, so that's a very good thing. And last question, ma'am, to all three of you. So last one question, and that is, which genre you like about movies? Like drama, comedy, horror. What genre you like about movies? Comedy. All types I enjoy it. Okay, all rounder she is. I also like drama movie. Yeah. Okay, that's a great thing. Thank you very much जो आपने मतलब बताया यहाँ पे. So thank you very much for this. तो अगेन हम वही गेम खेलेंगे. तो सर मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगा और आपको तीनों सवालों के जवाब 1 वर्ड में आंसर करना है. ओके, तो पहला सवाल, जब इफ़ी आपके मन में आता है तो क्या सा आता है आपके मन में? इफ़ी मेरे मन में आता है तो मुझे कल्चर याद आता है. Okay, second thing, why you think you like movies? Because movies rhythmically draw attention to the reality in the world by focusing on a particular topic. You want it in one word, na? Huh? Just one word. One word, because it reflects. Mirror is the word. Okay, superb, mirroring the world. And last तीसरा सवाल वो है, डिफरेंट जॉनर्स होते हैं मूवीज़ के, ड्रामा, कॉमेडी, हॉरर, लव स्टोरी. तो आपका फेवरेट जॉनर कौन सा है? मेरा फेवरेट जॉनर है टेक्नो रियल. टेक्नो रियल. हाँ. Okay, टेक्नो रियल. We got the word right. आता मुव्हीजांच्या बाबतीत एक मनशाक आमी कशें विसरपाक शकना, दॅट इज लेजंडरी राज कपूर, जाका आमी शोमॅन ऑफ इंडियन सिनेमा म्हणटा. आतां ताज्या लेगसीक ट्रिब्यूट दिवपाक आयला रणबीर कपूर. पळोवया ताजें कितें म्हणणें ह्या शोमॅनाचेर. As artists, it's our moral responsibility, to make movies that entertain people. Of course, that's one set of movies. But also, I think knowledge is such a large thing that, we need to put out there. What can be done? What's going wrong? So many people don't even know what's right or what's wrong. You go on social media and you watch your feed or you read a headline and it can be very misleading. So I think knowledge is something that the awareness is very important. And if I can create any awareness for anything, not just ocean related, for anything that will protect the planet, I think it's all our moral responsibility. There are various reasons. Of course, music is something which always touches anybody. You don't need to know the language, as long as the melody, the singing. Music is such an art form that really, touches your soul. But I think also the characters and the stories he made films on, it's something which was universally appealing. Not just the Soviet Union, if it's Eastern Europe, if it was the Middle East, if it was Southeast Asia. I remember when I was a student in New York, I used to wait for cab drivers who were from Russia or Ukraine, because whenever they got to know that I was from the Raj Kapoor family, they gave me a free ride. They never took money from me.
So I was always, I used to hail a cab and I used to first ask, where are you from? And he said, Russia. I used to sit in the cab and start a conversation. That was his impact. Like I said, I went to a film school in New York. When they were talking about the Kieslowskis and all the filmmakers from around the world, they were also mentioning Raj Kapoor and Guru Dutt. So that was his impact, and his impact was only through his work, the movies he made. He was so perceptive. मुझे याद है कि जब मैं सावरिया की शूटिंग कर रहा था, मेरी पहली पिक्चर थी, मिस्टर संजय लीला बंसाली डायरेक्टर थे, और हम करजत में शूट कर रहे थे, तो पापा हैड कम वन डे टू सी द शूटिंग, और जब वो सेट पे आए तो ऐसा सब जगह ऐसे देखने लगे, और उन्होंने कहा कि ये जो बड़ा बुद्धा का हेड है यहाँ क्यों पड़ा है, इतने सारे विंडोज है, लोग कहाँ हैं, सिर्फ तू और सोनम क्यों सड़कों पर ऐसे चलते जा रहे हैं, रात क्यों है, दिन कब होगा. So he asked me these certain questions and I didn't really have answers. I was like, you're old school now, this is really cool filmmaking and all of that. But I remember he sat in the car and he told my mom कि ये picture थोड़ी चलने नहीं वाली. You cannot alienate your audience with place and time. There has to be some relatability. And again, उस वक्त मुझे I didn't value what he said, but I completely understand what he said. राज कपूर जी की ऐसी कौन सी फिल्म है जिसमें आपका मन एक असर करता कि ये रोल मुझे मिला होता, और यदि उन पे कोई बायोग्राफी बनेगी तो आप काम करेंगे? जैसे यहाँ मैंने ये दोनों सवाल के उत्तर दिए हैं कि अगर बायोग्राफी बनेगी तो डेफिनेटली मैं उसमें एक्टिंग या डायरेक्टिंग या कुछ इन एनी एस्पेक्ट आई वुड लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ. और उनकी जो फिल्में मैंने पहले बोला था श्री 420, बट क्योंकि जस्ट टू बी डिफरेंट आई विल नेम अनदर फिल्म. I would probably say Sangam. Sangam is another all-time favorite of mine. तर आता मी पळोवन घेवया आमचे गोवन आर्टिस्ट, तांचे रिएक्शन इफी बद्दल कितें आसा, तांची खंयची फिल्म आसा इफीन, आनी तांचें कितें म्हणणें आसा हाज्या बाबतीन. हॅलो एवरीवन, आज आमच्या बरोबर आसा आनी एक गोवन आर्टिस्ट, येस, फ्रॉम द मुवी कॉल्ड मेमोरीज ऑफ मेंजीफेरा. सो आतां ह्या मुवीच्या बद्दल तांचो कसो एक्सपिरियन्स आशिल्लो आनी इफी बद्दल आनी ह्या मुवी बद्दल ते आतां आमकां डायरेक्ट सांगतले. हॅलो मॅम. हॅलो, म्हजें नांव अलिशा मिनेझीस आनी हांव एक थिएटर आनी फिल्म आर्टिस्ट. सो इफीक हो म्हजो दिसता म्हाका थर्ड टायम हांव आसा हांगा. फर्स्ट टायम हांव 2022 आसलें, तेन्ना एक मुवी आसली, डायरेक्टली मागीर एक इयर गॅप आनी आतां येयला. सो ह्या फावट म्हजे 2 मुवीज आसले, एक हँगींग बाय द थ्रेड आनी एक मेमोरीज ऑफ मेंजीफेरा. सो हँगींग बाय द थ्रेडान हांवें जस्ट कॉस्ट्युम्स केल्ले. सो इट वॉज अ नायस फिल्म बेस्ड ऑन सम कास्ट. एंड दीस वन आतां जी मेमोरीज ऑफ मेंजीफेरा जावपाची आसा, इट इज नाव टुडे एट 5:45. स्क्रिनींग इज इन एन आयनॉक्स ऑडी 4. सो त्या मुवीच्या बद्दल सांगचें म्हणल्यार इट इज अ ट्रिब्यूट टू द आयकॉनीक मँगो ट्री ऑफ दिवार आयलँड. So that was some unique tree which was there. Everyone used to recognize Diwar, like they used to come to know की अच्छा चलो आमी पावली दिवाडे, फेरी क्रॉस केली, आतां वाटेर फुडें पावन ती झाड मेळ्ळें की फुडें वचून गांव आसतलो अशें तांकां दिसतालें. सो लायक अनफॉर्च्युनेटली द ट्री फेल डावन, म्हणजे पावसाक लागून इट वॉज ऑलरेडी ओल्ड. सो ह्या वर्सा ती अप्रूट जाली एंड वी वर ऑल सॅडन, लायक दे वर लॉट ऑफ स्टोरीज, मेमरीज. लोक खूब अशे दुखी जाले की अरे आतां कितें, आतां आमी ताका रिवायव करया. खूब असो प्रयत्न बी केलो, बट इट वॉज नॉट पॉसिबल. इट वॉज कंप्लिटली ब्रोकन डावन बिकॉज भितरल्यान ती खूब अशी पोकळ कशी जाल्ली. So that's why it got uprooted. So then the director Himanshu Singh, he approached me, he told me this is the plot, I want to like do a film based on this, and I felt very attached at the first moment he told me. I am like, okay fine, chalo, someone is there who really wants to give a tribute to the people of Diwar, and I said okay to that. I said okay fine. Then I went, I met him, he told me the plot, I arranged the people. So this film is based on basically the mango tree and the memories related to it, like the people around it, what memories they have, how they grew from childhood to like adulthood, seeing that tree, and तेंचे सगळे कितें कितें आसा पळय, it is based on the memories of the tree. And also this film is not like a typical film, it is a docu fiction. I mean it's a documentary and a fiction story combined, so it is shown in a cinematic way. So you guys will enjoy it because it's kind of a story narration, real people talking, but then it has some cinematic touch to it. So Himanshu sir has shot it in a beautiful way.
या दॅट्स इट. सो इवन जशें पळय हांच्यांनी सांगलें म्हाका आय थिंक याद जावपाक लागली. इज इट द सेम जे आमी मुवीज फायंडींग फेरीन बीन ओके तांदून आसा. सो बरें दिसलें की ह्या फावटी इफी डायरेक्टर शेखर कपुरान ऑलरेडी सांगलें की स्टोरी टेलिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी स्टोरी टेलिंग वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान आमकां दिसता. हांच्यांनी मेमरीज जे लोकांचे आशिल्ले तांच्या थ्रू स्टोरीज भायर काडल्या आनी ते दाखोवपाची ट्राय केला. अरावंड कशे कॅरेक्टर्स आसा आनी कितें आसा कितें सांगूंक शकता? कॅरेक्टर्स अशे लायक नॉर्मल पीपल आसा लायक हांव आनी तूं उलयता बट तशेंच नॉर्मल लोकांक घेतला गांवचे लोक. लायक आय लिटरली नो ऑल ऑफ देम. सो तेंची जे कितें यू नो लायक ग्रॅनी आसा तेतून जी सांगतली लायक अबाउट हर लायक यू नो वेन शी वॉज यंग हाव द ट्री वॉज. इट्स बीन देर फॉर मेनी इयर्स ना लायक यू कॅन से सेंचुरीज लुकींग ऑल द स्टॉम्स अराउंड इट अँड एवरीथींग. एंड येस एज यू सेड की तेच झाड जे थिंगासर एक वॉडाफोनाचो एडूय शूट केल्लो फायंडींग फेनी एंड इट वॉज ऑल कॉमर्शियल लायक यू नो ऑल दिस फिल्म्स एड्स यूज टू कम दे. इट वॉज समथींग व्हेरी युनिक एंड अ लँडमार्क ऑफ दिवार आयलँड. सो पीपल यूज टू गेट अट्रॅक्टेड टू इट एंड ऑल दॅट. सो द कॅरेक्टर्साचे उलोवचें म्हणल्यार नॉर्मल लोकांक घेतला लायक फ्रॉम ओल्ड till young, like how they used to play around it, what memories they have, like crossing. For me, for example, if I give you a story about me, when I used to pass that side, I used to always feel like, you know, that was some heavenly area, like I used to feel nice calmness over there. Like whenever I used to get tired from work, हांव थिंगा बसलें मे बी स्कुलाकसून येतालें तेन्ना म्हज्या फ्रेंड्सां वांगडा चल भोंवपाक या म्हणलें झाडां पानाक वचून बसलें. एंड लायक इवन इन आफ्टरनून टायम दॅट एरिया सरावंडींग इट वॉज व्हेरी कूल. We used to go sit there in hot sauna, but मातूय तितली गरमी जायनासली. But the trees to protect it was like, you know, full fields कशें तें आनी ती मदेंच एक आसा. सो ती फूल तीच एरिया लायक कायंड ऑफ इट वॉज व्हेरी पीसफूल. तुका एक पीस ऑफ मायंड मेळटालो. यू यूज टू सेटल डावन ऑल दोज थिंग्स. So these type of stories are there in these films where, like, you know, all these Diwar Islanders are going to share in the film. सो नाव वी आर ऑल एक्सायटेड. बीन ज्या तरेन पळय सांगलां ते झाडा बद्दल ते एरिये बद्दल म्हणजे लायक नॉस्टेलजिया येता की आमची बाबा मेमरीज आसा आनी त्या लोकांचो पर्स्पेक्टीव जशें की हांच्यांनी सांगलें एक ग्रँडमा आसा तिजो पर्स्पेक्टीव खूब वर्सां पयलींचो. इट वील बी रियली इंट्रस्टींग टू सी द मुवी. तुमी मुद्दम पळयात. आतां म्हाका एक लास्ट तुमकां विचारपाक सोदता हांव. ही मुवी करता आसतना सिन्स यू आर अ प्रोड्युसर ऑल्सो इन द कास्ट, सो ही मुवी करता आसतना अशी तुमची बेस्ट मेमरी कितें जाली तुमी शेअर करपाक शकता? बेस्ट मेमरी म्हाका दिसता सगळ्योच बेस्ट मेमरीज आसले त्या झाडाक घेवन. बिकॉज फ्रॉम यंग एज इट वॉज अ रुटीन फॉर मी की स्कुलाक वयताले तेन्ना आय यूज टू क्रॉस दॅट ट्री. आय यूज टू लायक वेन एवर आय यूज टू कम बॅक सांजचे गेले खेळपाक गेले जाल्यार आय यूज टू बी वीथ माय फ्रेंड्स बायकीन भोंवपाक गेले ते झाड दिसतालें एंड दॅट यूज टू बी अ रुटीन लायक ट्रॅवलिंग एवरी डे सीइंग दॅट ट्री. इट वॉज कायंड ऑफ लायक यू नो इट वॉज hallowing us, kind of. It was like saying hi to us in the morning, like good morning, good night, etokos tashe type. So my favorite memory was I think आमी एक फिल्म शूट केल्ली त्या झाडा कडेन and which unfortunately didn't release, but then that was my most favorite memory because I remember we were sweating आणि आमी सारकी tired जाल्लीं. And that tree kind of like that calmness म्हणटा पळय तशी आसली. Same thing what I said. It used to provide, like I told you the same thing, like it used to give me some kind of calmness. And it had many stories to tell, like as if the tree was talking to you. तशी असले. And you know, it is not a single tree. It is like maybe 2-3 trees are combined. So it's kind of a very big bark आणि it's माझी memories आसा. Like sitting there is my most favorite memory. Thank you very much, Alisha, for this interview. And also, yes, we will definitely watch the movie. And yes, तुम्ही पळयात की पळोवया की कितें जाता आनी कसो पर्स्पेक्टीव आसा डिफरंट लोकांचो. थँक्यू वेरी मच. आता मुवीज म्हणजे मुवीज आपल्याबद्दल सांगतात तेन्ना सेलिब्रिटीज येतात. आता सेलिब्रिटीज इफी बद्दल आपल्या मुवी बद्दल कितें सांगता ते पळोवया. सिन्स इन युअर कर्टन रेजर यू हॅव सेड की स्टोरी टेलिंग इज एवरीथिंग अँड द इंडियन सिनेमा इज जस्ट 5% when it comes to स्टोरी टेलिंग. सर लाइक स्टोरी टेलिंग कितनी इम्पोर्टेंट है कंटेंट क्रिएशन में, नॉट जस्ट फॉर फिल्म्स बट अदरवाइज ऑल्सो? हम कहानी ही तो हैं. हम एक दूसरे से बात करते हो, कहानी सुनाते हैं.
जब शुरू में आदमी ने चांद देखा तो उसको समझ नहीं थी चांद क्या है, उसने कहानी बता दी। हम जिस चीज़ों को आहिस्ते आहिस्ते पेड़ों की कहानी सुनाई, पत्तों की कहानी सुनाई, जितनी आसपास की चीज़ सब हमारी कहानी है। तो इंडियन फिल्म कहाँ है, क्योंकि हमको कहानी है, एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो एक दूसरे को कहानी सुनाते हैं। शुरू से आपकी दादी आपको कहानी सुनाती थी, फिर आप भाई बहन अपने आप को कहानी, सबको कहानी सुनाते हैं। तो इस कहानी से जुड़ी हुई हमारी फिल्म इंडस्ट्री है। मैं क्या कह रहा था, नहीं मैं क्या कह रहा था कि थिएट्रिकल फिल्म कम होती जा रही है और दूसरी चीज़ें जैसे शॉर्ट फॉर्म वीडियोस हैं, अपना लोग इंटरनेट पे बात करते हैं, वो सब वो कहानियों का ज़रिया और भी हो गया। पहले तो ये था कि किताबों में छपती थी या फिल्मों में दिखाई देती थी, अब टेक्नोलॉजी की वजह से कितने और ज़रिए हो गए कहानी बताने के, उस हिसाब से कह रहे थे फिल्में कम हो रही हैं। आई थिंक इट्स टेक्नोलॉजी, इट्स नॉट गुड और नॉट बैड। मुझे याद है जब पहले शुरू में ट्रैक्टर आए थे इंडिया में तो सबने कहा था अरे ट्रैक्टर आया तो किसान ख़त्म हो जाएगा। ना किसान ख़त्म हुआ और ट्रैक्टर भी आया। तो प्रोग्रेस और टेक्नोलॉजी जो आती रहती है तो हम एडजस्ट कर लेते हैं। अब किसान हल की वजह से हल की बजाय ट्रैक्टर चलाता है। हॅलो एव्हरीवन, आज आमच्या बरोबर आसा आमचो चायल्डहूड फेवरेट कॉमिक सुपर हिरो जो म्हणजे आमच्या लायफान जे ल्हानपण आमचे बरें गेला पळय ते ह्या पर्सना खातीर आज तो आमच्या बरोबर आसा। सर, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अभी आप गोवा में आके आपको कैसा लग रहा है और इसी के मामले में आपको क्या कहना है? देखो, इफ़ी जब से स्टार्ट हुआ तब से हम आते हैं। मेरे बहुत पुराने दोस्त जो 40-40 साल पुराने दोस्त हैं, हम हर साल गोवा इफ़ी को सेलिब्रेट करते हैं वो 7-8 दिन। तो गोवा हमारे लिए बहुत ही करीब की जगह लगती है। गोवा के बहुत प्यारे लोग हैं, यहाँ पर हमारे बहुत सारे मित्र रहते हैं और जब हम इफ़ी आते हैं हम पूरा रिज्यूनाइज होते हैं। मुंबई के जो हालात होते हैं और इतना स्ट्रगल और इतना क्राउडी होता है वातावरण, वहाँ से थोड़ा चेंज मिलता है। यहाँ का सी फूड, यहाँ के प्यारे लोग हमें बहुत भाते हैं, इसलिए हम हर साल आते हैं। सर, आपकी जो फिल्म बनी थी, जो कैरेक्टर जो आपका था उसमें जो आपके डायलॉग वगैरह बहुत अच्छे थे। आपकी बॉडी लैंग्वेज में भी आप मतलब एक्टिंग जो आपने दिखाई थी, मतलब इवन न्यूज़ पे भी आपको देखा तो आपको मतलब हंसने को आ रहा था। उस कैरेक्टर के लिए आपने कुछ खास तैयारी की थी? उसमें मैं मतलब जस्ट NSD पास आउट होके आके मेरे 4-5 साल हो गए थे और उस समय बहुत एनर्जी और उस तरह का काम करने की जैसे एक फॉर्म है कॉमेडिया दिलार पे, जिसमें जो है ना बड़ा फिजिकलाइज होता है। अभी तो पता नहीं मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, लेकिन उस समय मैंने बहुत फिजिकलाइज करके उसको जितना ज़्यादा बच्चों के मन को अच्छा लगे वो क्या करना चाहिए ये सोच के मैं बहुत मेहनत करता हूँ ताकि लोगों को, बच्चों को अच्छा लगे। और वाकई अभी मैं आप लोगों को देखता हूँ जो स्पेशली 90s के क्या बोलते हैं बॉर्न है, उन्हें उनके लिए जो है ना मैं उनके नॉस्टैल्जिया में मैं हमेशा रहूँगा। ये मेरे लिए बड़ा अच्छा लगता है। सारे लोग ऐसे बोलते हैं तो मैं बहुत टच्ड होता हूँ। थैंक यू फॉर गोवा के आपके फैंस के लिए आपको कोई मैसेज? गोवा के फैंस के लिए देखिए, गोवा के सारे जो मेरे फैंस रहे हैं वो कभी भी आके मिल सकते हैं, क्योंकि मैं हर साल आता हूँ और मैं आपके लिए क्या बोलते हैं विश करता हूँ कि आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे और मेरे से भी मिलते। हॅलो एव्हरीवन, माय नेम इज ओमकार देशप्रोन. आज आमच्या बरोबर आसा दिलायला लोबो, हू इज द वायस चेअरपर्सन ऑफ ESG. आता जशी की आमी पळयला ह्या दिसांनी जितले आमी सेलिब्रिटींग कडेन उलयला सगळ्यांनी एकूच गजाल म्हटला की सगळे अरेंजमेंट बेस्ट जाल्या, फॅसिलिटीज बेस्ट आशिल्ले, सगळी ह्या फावटीची इफी बरें म्हणटात. आनी हाज्या फाटल्यान टायरलेसली काम करपी लेडी आज आमच्या बरोबर आसा. तर हॅलो मॅम. मॅम, हांव तुमकां विचारपाक पयलीं सोदता की इफी म्हणजे तुमच्या खातीर कितें? IFFI is first of all, it's a platform when it is being held in Goa, first of all to our Goans. आणि तोच इंटरनॅशनल आणि नॅशनल स्टार्स हांगा येतात आणि आमच्या गोंयच्या फिल्म मेकरांक इट्स अ बेस्ट प्लॅटफॉर्म फॉर देम टू
to see how where their film stand. You know, you can compare माझे बाबा picture जेन्ना हांव करता, where is my movie lacking behind. First of all, I congratulate, I mean we had got 25 entries under Goan section and तितूंतले 14 select जाले to be screened in various screens here in for this IFFI. तांकां congratulate करता आनी जे जांकां सिलेक्ट करूंक ना तांकां पासून यू नो इट्स नॉट ह्या वर्सा सिलेक्ट करूंक ना बट यू आर देर. द थिंग इज आय ऑलवेज से पार्टिसिपेशन इज मोर इम्पॉर्टंट देन विनींग एंड लुजींग इज वन सायड. पूण इफी जेन्ना आमी करतात आमच्या गोंया करतात इट्स अ बेस्ट प्लॅटफॉर्म फॉर आवर गोवन्स यू नो टू कम and enjoy the Goan movies as well as the Indian panorama movies and international movies. And that's it. It's a big platform, global platform for our Goans first of all. सुपर. म्हणजे जसे मेहमान सांगले पळय ते कोशिश करने वालों की हार नहीं होती की पार्टिसिपेट करा. जिकप हारप बिरप ते मागीर पळोवया पण पयलीं पार्टिसिपेशन इज इम्पॉर्टंट. सो मॅम जशें की आतां आमी इफीच्या बद्दल आसा, इफी इज ऑल अबाउट मुवीज. सो तुमच्या ल्हानपणांत तुमच्यो खंयच्यो फेवरेट मुवीज आशिल्ल्यो? I am not much into movies, पण you know movies of Amitabh Bachchan, movies of Shah Rukh Khan, Salman Khan, Amir Khan, yeah, those very classy movies only I watch. I mean, and in the evening it's more about sitting in front of the TV and watching part of movies, you know. मॅमाचे हे रूप खूब कमी लोक पळयता आनी एस्पेशली जशें की ह्या फावटीचो यूथ हो थीम आसा आमचो. सो युथाक खंय ना कितें खुबश्यो एंटरटेनमेंट जाय आसता. सो एंटरटेनमेंटाक गोवन फिल्म्स, खंयची गोवन फिल्म्स तुमकां आवडल्या ह्या दिसांनी, खंयच्यो पळयल्या तुमी? पोवपाक सगळेच मेळोंक ना बट टुडे इटसेल्फ वी हॅव स्क्रीन्ड 3 movies आयच्या दिसा, शॉर्ट फिल्म्स और डॉक्युमेंटरीज. जीवन योगी, रवींद्र केलेकर. सेकंड विल बी आदिओस and the third will be Silent Sacrifice, Untold Stories of Goa Liberation. ओन्ली आमचे बऱ्यांतली बरी पिक्चरां हांगा स्क्रीन जातात. सावत म्हणून एक मुवी ते आमच्या गोंयचे फिल्म इंडियन पेनोरमा सेक्शनान you know has got selected and is getting screened. It's another proud moment. So I congratulate them, all of them, and really a big proud moment for us Goans. So ma'am, IFFI and गोवा हाज्या बद्दल तुमचें कितें म्हणणें? What better place to have IFFI than in Goa? जसो की मेहमान उलो मारला की तुमी या आनी थोडे दीस आसा एन्जॉय करा मुवीज आनी एंटरटेन जाया. थँक्यू व्हेरी मच मॅम. आमच्या गोवा स्टेट फिल्म फेस्टिवल विल बी हेल्ड इन मार्च आणि फिल्म फायनान्स स्कीम जे आमच्या फिल्म मेकरांक जाय that also will be available, will accept their application from 9th of December and all the details will be put on our website www.esd.co.in. हेजेर वचून तुमचे and everyone who wants to know more about this you can also see that. That will be very helpful for the young filmmakers, ma'am. Thank you very much for this interview. That was the end of day 6. खूब मजा आयली, खूब कितें पळोवंक मेळ्ळें, खूब जाणांचे पावरफूल इंटरव्यूज मेळ्ळे. So this was all about day 6. Now what will be the thing for day 7? See you tomorrow.